कहूँ मैं गणपत का एक ही राह होता है, अच्छी सक्सेस, मीनिंग I am just a good fortune, you will achieve everything in the good measure because I am with you. Can I draw you in? I really could use your help. गणपत 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 क्या है, गणपत 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 क्या है, मेरा नाम रखे ओ गणपत जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ नाम के जावांगा, मैनू ठंड मिलेगी नहीं ਤੁਹਾਡੀ रक्षा मिलेगी ओ पागल मूर्ख। मैं गणपत वांगर मैं निशाना जो चंगे मार्ग पर लावांगा तो मेरा निशाना उत्थे तक जाएगा जिथे तक मैं उतों मुकरांगा ना, मैं रहांगा तीर वांगर सीधा, मैं चंगे पर जाना है तो चंगा होगा, मैं नहीं मुड़ना, मेरा राह एक राह पर मैं मुड़ांगा। गणपत जी देवों के सरकार, कैसे तूने दिखाया चंगा मार्ग का आसान, जाओ हम देवों की देव, दिखाओ हमें सिख कैसा सरकार करता है। तूने क्या था गुरु नानक देव जी, देवों को मत पूजो, क्यों? क्योंकि वो गुलाम हैं, उनकी इच्छा इरादे सब हमारे पास हैं, हमारा सुख वो चाहते हैं। तुम ऐसे करते हो जैसे कि उनको पूजना चाहिए, उनको तो पूजना चाहिए कि वो ना प्यार करते नहीं। दैट्स नॉट इवन अ सोल्यूशन टू द डेथ ऑफ द किंग्स हु केम when heaven fell again. Have you not heard of the pharaohs and the Aryans? Have you enshrined the slavishness of a people, or have you inscribed in the ways that they achieved the impossibilities that you so claim? Which one is it? Do you want the revolutionary ability to create unimaginably higher elite forms of I say architecture, literally just a joke and a half, pathetic as it is. I mean, you guys took a pillar that was cut very long string and you wondered what they were going to do with it. But they might have just cut it and perfectly placed it there as if it was just because of the like line across it, that it was just a bum piece of work. No, dude, they moved those pillars somehow and they expected to see you try to do that. No, dude, they might have just made a joke out of you. Well, maybe they're still laughing at you right now, dude, because that's hilarious. When you think of the end of times, Jesus Christ, you died 2,000 years ago. Still, I have not found a way to marry a mother that taught you. I have not found a way, oh dear God, to find a father who could have had a good child and a child so glorious that would not fight the empire, but only the corrupt. A failing fight to begin with, as they are protected by that law. Jesus Christ, when you took that baptism, you signed up for freedom of humans of all kinds. God, I say Jesus Christ, and I say, that's it. Say again, मेरा नाम मैं माफी गुरु जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, जे मैं ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਚਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ मैं तुम जप्पियाँ मेरे की पैर चुमा, पर इतना दे गुरु ऐसे नहीं होते पुत। इतना दे गुरु कैसे होते हैं? इतना दे गुरु कोई विल्ला होता है जो इतनी अच्छी बात कर देता है कि कुर्बान किया सारा धर्म का मार्ग, पुत तक वार दिए, बंदे तक दे दिए, पर एक ग्रंथ बचाने दे लिए सिर्फ एक ग्रंथ गुरु इन्ना कुछ तुसीं कीता, एक ग्रंथ कट के रखिया बस। हुक्म आपां जे सिख हाँ ते आपां जे सोचीए 10-10 हज़ार बंदिਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੌਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਦਿਨ ਵੇਖੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਪੈਸਾ, ਲਾਲਚ, ਮਾਇਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ 10-10 ਸੌਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਗੇ, ऐसे मार्ग पर चलना, मार्ग तुम्हारी, हम तो चवल हैं। कैसे औरंगजेब को तूने ख़त्म कर दिया, कैसे गुरु ग्रंथ को ग्रंथ स्थापित करके निहंग तक एक एक सिख तक, एक एक सिखनी तक, एक एक सिखनी दी बच्ची ते पुत्र तक तूने वारन तो मुड़िया नहीं। सरकार मैं जानू तुझे गुरु गोबिंद सिंह जी, मैं तुहाडे चवल हाँ, तो कोई मैनू नहीं लगता तुहाडे बराबर हो सकता। We go to Allah and we hear of words of others guys like the gods we serve. We hear messiahs and we hear of someone else, prophets I would say, some weird guys that do weird things that sets them apart. We hear of these stories and we care not, because you know what? That's a man's accomplishments, and Allah will promote that. You want to say much more of Allah? Say, how far have you come in eating the pig, my friend? Because you never did enough for the pig who is your woman, but you didn't eat the pig that you call swine. You oppress your woman, you keep her in the bedroom, locked up in a cage, and yet you want a bird in a cage as well? My friend of Allah, who says Muhammad is the one who is last to be seen, that Allah never comes. We mankind are just that dumb then. We are never your equal, Muhammad. We will never live up to the words of Allah. Why should we read the Quran if we think pig is swine, but our women are worse than pigs? Because pigs at least we don't eat. We at least treat them like they're divine. These creatures that are almost our equal, that are definitely in their ways just the perfect ideal to every man who is of good age. These women are not even worth a date as they are. You say respect. Where has been your respect when you just wanted a woman in the bedroom and a kitchen? Where's her education? Where's her desires? What passions has she had that she contributed to the world? Anytime my passion shows, it shows up in a way that the people see, because I want popularity, and that's what she wants too, baby. And if you want a more robust system, just find one of women's authority. Their contributions, that's how you measure the success or the goodness of a people. Men have done much. I've heard of Plato, I've heard of Aristotle, but Jane Eyre, Anne Frank, pathetic medals of your divinity, ladies. I have seen none, but I assume and I potentiate as if you are the true inheritors of the Son. As divinity says, a man is just a tool, but a woman, a cherished heavenly angel, and no man can get in the way of that. Even God must step in to serve that angel, because God will never let a woman so equal to him ever get hurt. He'll do anything for womankind, because womankind, man, I'm sure we're talking about God, right? We were talking about a simulation. That's why Allah is not human. Of a tree, of a car, of a design, of a mind, of the way we work. Certainly we can't explain this. Certainly it's not a simulation. Make sure you know how long the rodeo goes, because your human abilities are so all-consuming. As a mind, you are metaphysic. Go first to the dumb individual, but then brute force your way to the metaphysical to get more universal soul.
We will not have soul. We have ownership of planets. Futures are so far away that we can dream up. I don't think they even made it to the moon, but I plan of Jupiter. What say of Pluto and Nash? No, I say nothing of Pluto and Nash. I say of Jupiter. And what say of the sun? What say of an energy? And what say of the cloud that cannot be? I don't know how the sun functions, but I know it thinks. How can my nuclear fusion think like the sun helps me think? Brain power, this is all lunacy at this point. Once I went to the sun and saying it thinks, I was now proven hypothetically improvable in confirmed, just a hypothetical assumption, just a hypothetical opinion. No, just a poetic grandiosity of the material nature and how beautiful it is. Look at that sun, look at the sky, look at the trees, how they make my life bright. When a girl walks by, I see a beautiful girl. When a boy does, I say, you could lose some weight or you could gain some too. When you see something, what do? I go to the best of it. Or I try to make it the best I can. I do. What say you of a Ganpat? I learned from Ganpat that if you aim for the good and you stay fully aligned with the end in sight, everything along the path is just consequential and means nothing. The end is secured. But if you waver, just know, sometimes God isn't called, son. Never waver. Have you heard of an urgent? Have you heard of something genius? Have you heard of something almost demonic or impregnable or inhuman? What say of superhuman of Kalal? I say of superhuman Kalal. These things are again theoretically unaligned with common sense. You cannot have a pinpoint accuracy of the precise future. Yes, you fucking can. Shut the hell up. You don't know what you're talking about. Every time the sun's energy starts pulsating, or the universal magnitude or energy waver starts pulsating, or let's say we get a closer interaction with another sun's energy and radiation, who do you think gets the best off? Well, I do. I know then heaven comes true. Because all the energy, our brains use that somehow. That's all I know. That is hypothetically viable. That is theoretically a true possible, and not true because no verification can be made, but certainly to falsify that is impossible because the timing of the sun's impulses align so perfectly with novel revolutions. Galileo, you were the novice scientist, not because you were not intelligent, but because the first of your kind, you had to face the most challenges. Everything was a hurdle and a half. So how grew your ego? It grew so grand. But then of the next, you learned a little more. And then came someone like Einstein and said, E equals mc squared. And that's how nuclear weapons were born. Nuclear power, plants, energy. I say I aim to the good. I deviate. No. I pinpoint, precise, arrow attack everything that is going to change the way. I don't know how. I don't know why. My consequential alignment with the good end means that's what's going to give. Without my deviate you from yourself, you cannot, because now you're a slave to a higher cause. This you do to yourself, boy. Wisest words of a guru, my son. Guru Gobind Singh. If you knew if that was the end, would you have done it?
I only ask you because I am a fucking fool. And I would consider it. If I knew the good to be so good, and I knew if everything repeated the way it did, and it had to be the same way, then, well, what say you over just a single individual? Wouldn't that change the whole simulation then? I prefer being alone, doing it just alone, if that's the risk I take, but prefer of a Guru Gobind Singh. He saved the Granth. If he did it again, he would save his father too. No mercy to any Singh who says he's a Singh and then doesn't read the Granth. ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਲਵਈ, ਮੈਂ ਚਵਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅੱਖਰ ਚੰਗੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਰ ਪਰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਵਾਪਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੋ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਹਾਰਦਾ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੇ ਕੁਛ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਰੋ ਹੁਕਮ ਉਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦਵੋ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਥਾਨ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ऐसे मलबई ऐसे चवल हम कोई सिंह ऐसे दुख ना देखे। गुरु गोबिंद ने तावी गुरु ग्रंथ अज तक दिखाता तुम। ये देव 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 ये देव देव ना इंसान ने ना कुछ एक किताब बचाने ਲਈ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜੋ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਜਪਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ, ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਥਾ और मैं भी बंदा वहाँ, तो मेरा अहंकार बहुत हो गया है। इतना मैंने सुन लिया, अब तो मैं गुरु गोविंद से आगे ही जाऊँगा। मान मेरा सरकार, मैंने ऐसा गुरु देखा ना कि हम तुम्हारे से अच्छे हो सकते हैं, ये तो पाप है। नहीं गुरु सरकार, मेरा कमल है कि मैं सोच सकना भी तुसी मैनू तुहाडे तो अच्छा कर सकते हो। ऐसा तो हो सकता है अगर तुम चाहो। गुरु जी तुसी कहते हो तुम जैसे गुरु रब दुआएं मांगते हैं, तुम्हारे जैसा कोई गुरु, तो हम तुम्हारे से आगे बढ़ेंगे। गुरु जी जे तुसी चाहो तो मैं तुहाडे तो अगे नहीं, मैं किसी इंसान तू नहीं, मैं देवतियां तू नहीं, मैं वांगर किसी होर चीज़ वांगर। पर सरकार गुरु गुरु जी गुरु गोबिंद, माफ़ करो मैं बंदा वां ते बंदे तुसी भी सो। मैं भुल जाना वां, मेरा हंकार मैनू वापस दो। मत मेरी छोटी हो गई सी, मत मेरी चुक्को। मैं हंकार मेरा भुल जाना वां, वो भी मेरा गुरु बंदा ही सी ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ। ਆ ਜਨਾਨੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਚੋਦਣ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰਕਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੋਮਲ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਵਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਿੰਘ। ਆਖਰ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ दो। आप जाने अल्लाह पर मार्ग हम कोई नहीं छाड़ते, माफ़ी मांगते हैं हम, पर हम सरकार सबके आगे नहीं। चवल है हम, पर चवल ही तो अच्छा होता है, क्योंकि चवल ऐसे ही बोल देता है जो होता है। कहते हैं अल्लाह पर, अल्लाह जाने अल्लाह के काम कैसे जाने, जिन जिन ऐसे जाने कि सेवा करे इंसान के मार्ग पर। जब जाए बंदा जिन पर सीख के कुछ आए, जैसे अर्जुन ने तीर कैसे चलाए, जैसे जाए हम अल्लाह पर तो हम जान गए अल्लाह तो अकबर। कहते हैं मैं कमुद्दीन मुहम्मदीन, मेरी जनानी सूर ना खाओए, पर प्यार इंसान तो उपर किसी का नहीं। तो कह आते ने सूर ना खाओए, पर बस सूर नूं तो मैं देवते वांगर उत्थे रखिया, पर जनानी नूं तो मैं बस खाण पीण लई रखिया। वेलड़ा मैं नहीं, उन्होंने मैं वेलड़ रखिया है ताकि मैं कब्जा रख सकां। तो ये दुनियादारी का कानून है, कला मेरा नहीं, ये सारिਆਂ ਦਾ है। तो आप सारे बस आ काम छड्ड देना। तो जे मैनूं लड़ना पिया किसी लिए तो मैनूं माफ़ करो, मैं खबरदार नहीं करांगा, मैं डर के भज जावांगा, मैं जनानी वांगर नच्चांगा, पर मैं लड़ना नहीं। मैं डरदा हाँ, मैनूं बचाओ कोई, मैं तुहाडे तो अगे नहीं जाना, मैं तुहाडे पिछे रहना है। तुसीं सिंह हो, तुसीं जाओ अगे। मैं कहना मैं तो कबूर नहीं, मैं तो फकीर भी नहीं, मैं तो चवल हाँ। मेरी डरपोकी देखो, मैं डरदा हाँ, मैं नहीं जाना अगे। लड़ना तो कोई सिंह ही लड़े, मैं नहीं एवें दा बंदा। They say of Allah, they say don't eat pig, and they do divine that, but every time of a woman, nothing, no such thing. That's my fucking obsession. If I want to commit to this, a command of a woman, I must be psychologically demented in my oppression. Why let her get educated? Why let her go out to her friends eat? Why just not lock her in the house with only cooking and a fucking TV? And the bedroom at night makes me very happy because all the bills are mine and all the money is mine and I am the king. Say, woman, you want to be mean to me? How disgusting. कहते हैं अल्लाह के हैं हम, मैं कहता हूँ तुहाडे सूर तुसी हो, तुसी खच हो। तुहानूं मारदे नहीं कोई, क्योंकि तुसी अल्लाह दा नाम लेंदे हो। तुसी कोई सूर नूं नहीं मार सकदे, सूर ते खच्चो तुसी हो।